Later, we discussed about the classification of services, like how people-based services are, where people are actually present, how equipment-based services, which are the services that we go get through equipments and not people, right? And then characteristics of services were discussed in detail. Then factor affecting the service operations. These are the factors, and then we discussed them in detail. And next was now we will start with service capacity planning. Although we give the brief intro about this, but let's talk in detail. Okay. And at the end of the session and between them, you can put it the queries on chat. So talking about सर्विस कैपेसिटी प्लानिंग, जैसे आपको नेम से पता लग रहा होगा, तो सर्विस इंडस्ट्री जो होती है हमारी, जिसमें देयर इज नो प्रोडक्ट, वी आर जस्ट गिविंग सर्विसेज टू any customer or consumer. So this industry work hard to satisfy customer, whether your organization is an engineering होती है या consulting firm होती है या फिर customer experience, customer satisfaction बढ़ाना हर किसी का ultimate goal होता है. तो capacity planning basically helps you to create real value in ensuring that business can meet customer demand and in critical path for positive customer experiences. So आपको अपनी कैपेसिटी का ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि आप कस्टमर जो और आप कंज्यूमर जो है उसकी डिमांड आप प्रॉपर्ली मीट कर पाओ. दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज. तो टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी प्लानिंग, इट इज द एबिलिटी टू रिसीव, कंटेन और डिलीवर द प्रोडक्ट. कि भाई आपकी कितनी कैपेसिटी है रिसीव करने की ऑर्डर, फिर उसको बनाने की, एंड देन कंटेन करने की अपने आप में, एंड देन बेसिकली डिलीवर करने की. सो कैपेसिटी प्लानिंग इज द एडवांस डेवलपमेंट ऑफ मेथड और अप्रोच टू एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन receive, contain, or deliver its product. So businesses cannot afford to guess when it comes to volume or types or services or skill. Yeah. And people or organization they serve. So planning mistakes are costly, which is why capital planning must be considered, right? So um, आप मतलब आपको हमेशा डिमांड आपको पता नहीं लगती. हमने पिछली क्लास में देखा था कि डिमांड कैन बी फ्लक्चुएटिंग और डिमांड प्लानिंग करना इज नॉट इजी. सो अकॉर्डिंग दैट वी हैव टू डू द कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू प्रोड्यूस. सो प्लानिंग मिस्टेक आर कॉस्टली, विच इज वाई कैपेसिटी प्लानिंग मस्ट बी कंसिडर इनपुट रिक्वायरमेंट और कन्वर्जन प्रोसेस, राइट. सो अगर आपके प्लानिंग में किसी वजह से प्रॉब्लम हो गई है तो आपकी कंपनी को बहुत लंबा कॉस्ट पे करना पड़ेगा, एंड इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट द profit or loss and the revenue of your company. So how to successfully plan your capacity for services organization? Capacity has a measurable impact since the process also determine the number of services or people you can provide. The capacity planning is more than just a tool than for manufacturers, so it can distinguish your service organization above the competition. So to remain competitive, grow, and ensure you are overarching the positive hand experiences, your businesses need to know how much of a services or how many people can basically provide over a specific period of time. तो ये आपकी कंपनी को पता होना चाहिए कि कितना आपका लेबर चाहिए, कितना आप प्रोड्यूस कर सकते हो, कितना डिमांड आएगी. तो ये सब आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ता है, तभी आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डिमांड मीट कर. पता लगा आपके पास ऑर्डर आ गया बहुत ज़्यादा और आपके पास अपना प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी, तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है. या तो अदर वे राउंड के डिमांड आई नहीं और आपने लेबर इतनी सारी लेके रख ली, तो ये भी प्रॉब्लम है, राइट. सो इसमें हमें कैसे कैसे की कंसिडरेशन फॉर मतलब सक्सेसफुल की कैपेसिटी प्लानिंग के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं. फर्स्ट वी हैव टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज, then price services for maximum margin tied with customer value, then you have to acquire, train and terminate staff effectively. एक्वायर ट्रेन तो आप समझ में आ गए होंगे, आपको हायर करना पड़ेगा, स्टाफ ट्रेन करना पड़ेगा, और कभी कभी आपको टर्मिनेट भी करना पड़ता है. अगर आपकी आपने प्लानिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर किसी वजह से प्लानिंग सही थी बट आपकी डिमांड नहीं आई इतनी, या फिर मार्केट फॉर एग्जाम्पल कोविड आ गया या कोई वॉर हो गई, तो इसकी वजह से फ्लक्चुएट करता रहता है. सो ऑल दीज एक्टिविटीज बेसिकली इफेक्ट द प्लानिंग. सो उसकी वजह से आपको टर्मिनेट भी करना पड़ सकता है अपने स्टाफ को. एंड देन एक्यूरेटली फोरकास्ट डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट. अगर आपने डिमांड ही अच्छे से फोरकास्ट कर ली, मतलब प्लान कर ली, तो फिर तो भाई विन विन सिचुएशन है आपकी, राइट. सो मीट योर बजट व्हेन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज अ प्रोवन कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस टू मीट डिमांड with the least waste or increase the utilization rate. So उसमें basically they are on the path to improve customer experiences. Often organization assume or guess that they can meet the demand instead of having a real plan in place based off projected sales or demand forecast. So capacity planning eliminates the need to guess
So capacity planning includes categories to help business based on the timelines they have established. So short-term capacity, usually this is the daily or weekly period, but it can include quarterly period. Short-term capacity do not look at the trends and cycle, but consider customers and demands and seasonal variations. Give me 1 minute, team. I'll just check. I think there's a blackout. Just give me 1 second. Okay, so this is about the service capacity planning, and uh, uh, देन मतलब सर्विस कैटेगरी से हमें ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प मिलती है इससे. सो कैपेसिटी प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है. So capacity planning help business with budgeting and scaling so that they can identify optimal level of operations कि भाई उनका कितना बजट होना चाहिए और कितना उनका ऑपरेशन आ सकता है. तो बजटिंग बेनिफिट सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें बेसिकली बताता है कैपेसिटी प्लानिंग हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ सर्विसेज आर ऑफर्ड and the appropriate time frames and staff required to meet current demand and cover all operation costs. So this is an important consideration when establishing yearly budgets to effective or allocate money for expenses. अगर आपने प्रॉपर्ली फोरकास्ट कर लिया, आपने आपको प्रॉपर्ली अगर कैपेसिटी प्लानिंग स्टडी कर लिया, तो उससे आपको पूरा बजट बनाने में हेल्प करेगा और पूरा आपको वेस्टेज ऑफ मनी बहुत कम हो जाएगा. स्केलिंग बेनिफिट है, लाइक इफ योर बिजनेस इज कंसिडरिंग टेकिंग ऑन मोर स्टाफ टू हेल्प मीट एंटिसिपेट डिमांड based on their capacity plan, you might find that aside from increasing employee by 10%, you need to specific skill. नॉट टॉकिंग अबाउट क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं कैपेसिटी प्लानिंग को. सो कैपेसिटी प्लानिंग कैन आपकी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के इनोवेशन में हेल्प तो कर सकती है, बट इसके साथ एक रिस्क आता है, जैसे हर चीज के साथ आता है. तो टू हेल्प दिस मीट डिमांड एक्सेस द सर्विस डिमांड फैक्टर can affect the capacity including process like skill, quantity and quality behavior, and staffing, job subscription to a total labor, training, compensation, and turnover rates, external factor, union, government policies, and budget cycle. When considering demands, organization benefit from use of predictive demand planning software. So these modern planning matches the need of business like what if. So this is all about service planning. So let me know if you have any question. So this is basically service organization areas to consider that why as they grow and scale, whether it is adding staff or changing prices, capacity planning can determine how capital is required, as capacity planning looks at the data and operation to make future decision, right? So the last topic of unit 2 is सर्विकल मॉडल ऑफ मेजरिंग सर्विस क्वालिटी. हम सर्विस क्वालिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं. सो क्वालिटी आप जैसे नाम से पता लग रहा है, इट इज अ की टू अचीव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. क्वालिटी इज अ डायनेमिक स्टेट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट सर्विसेज पीपल एंड एनवायरमेंट दैट मीट्स और नीड एक्सीड्स द एक्सपेक्टेशन. Quality is rapidly embracing the nature of degree of impact of organization has its stakeholders. So service industry में definition of service quality tend to focus on meeting customer needs and requirement and how well the service delivered meet their expectation. In order to deliver and maintain service quality, an organization must first identify what that constitute quality to lose when it serves. So the key to ensuring good services quality is meeting or exceeding the what customer expect from the service. So it was clear to us that judgment of law and high quality service depends on how customer expect from the services, and it was clear to us that judgment of high and low service quality depends on how customer perceive
uh, the actual service performance. So, moreover, service quality is perceived judgmental result from an evaluating process where customer compare their expectation with the services they have received. While services quality is an overall attitude towards a service firm, uh, customer satisfaction is specific to an individual service encounter. Therefore, it is very difficult to come to a consensus to an definition of a service quality. अब जैसे आप you can see it on screen right now the cervical model of measuring service quality. So it is an instrument. ये एक instrument है जो एक पैरासोमन साइंटिस्ट है जिन्हें 1991 में दिया था. Has developed popular being used in the studies of जो सर्विस क्वालिटी में ये हेल्प करता है. So जो साइंटिस्ट थे पर Parasuraman, and they have developed a gap model for the subsequent instrument designing to identify the major gap between customer का जो expectation होता है और जो परसेप्शन होता है उन सब में गैप होता है. तो ये स्टडी करने के लिए सर्विस क्वालिटी फॉर कस्टमर्स पर्सपेक्टिव डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंस, राइट. तो सबसे पहले आता है भाई 5 डायमेंशन जो है सर्विस क्वालिटी मेजर्स को, वो है सबसे पहले टेंजिबिलिटी. सो इन सिंस सर्विसेज आर टेंजाइबल कस्टमर डिराइव्स फ्रॉम देयर परसेप्शन ऑफ सर्विस क्वालिटी बाय कंपेयरिंग द टेंजाइबल एसोसिएटेड with these services provided. It is the appearance of the physical facilities, equipment, personal, and communication material. Reliability. So it is the ability to perform the promised services dependently and accurately. Reliability means that the company delivers on its promises about the delivery, services about the provision, problem resolving and resolution and pricing. Customer want to do business with the companies that keeps their promises, particularly with the promises about the सर्विस आउटकम. रिलायबिलिटी होगी भाई. अब जैसे मैं आपको समझाऊं कि आप कितना रिलायबल है आपका प्रोडक्ट, आपको हम कितना भरोसा कर सकते हैं प्रोडक्ट में. टेंजिबिलिटी का मतलब कि अपने हाथ में ले सकते हैं क्वालिटी चेक करने के लिए. रिलायबिलिटी तो कितना हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं कि कितना हमारा भरोसा है. रिस्पॉन्सिवनेस इज बेसिकली आपका विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर. मतलब आप कस्टमर आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया है या फिर डिलीवर नहीं भी किया है, आपने ऑर्डर किया है, तो उसके बीच में आप अपने कस्टमर को कितना इजीली एम्पैथाइज करोगे, इतना उनके प्रॉब्लम है कुछ क्वेरी उसको कितना अटेंटिवली डील करोगे विद कस्टमर रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चन एंड कंप्लेन अबाउट द प्रॉब्लम. सो रिस्पॉन्सिवनेस इज कम्युनिकेटेड टू कस्टमर बाय लेंथ ऑफ टाइम. फिर फोर्थ आता है आपका assurance. So it means the inspire trust and confidence. Assurance is defined as the employee knowledge of courtesy and the ability of the firm in and its employee to inspire trust and confidence. So this dimension is likely to be particularly important for the services that the customer perceives as involving high rising or about which they feel uncertain about this. Right, and last आता है empathy. ये तो नाम से पता लगता होगा. It means to provide caring individual attentions to the firm provider and its customer. And in some countries, it is essential to provide individual attentions to show the customer that the company does good to satisfy his needs. And empathy is an additional plus of the trust of confidence of the customer, and at the same time increasingly loyalty. And in this competitive world, it is very important that customer का जो requirement है वो day by day बढ़ रहा है और change हो रहा है. तो कंपनी की ड्यूटी होती है कि तू मैक्सिमाइज ऑल द डिमांड्स ऑफ कस्टमर, एल्स कस्टमर विल नॉट रिटेन. वो आपके कॉम्पिटिटिव मार्केट में एकदम इजीली चला जाएगा. So this is all about Unit 2. We have started with operations management introduction. Then we discussed about the aim of operations management and product selection, product design, service design, and inventory control and operations planning. Right. So please let me know. We have already crossed 16 minutes. So let me know if you guys have any query up till now. Then we'll start with Unit 3. Okay, so Amit is asking, budget cycles are annually. Yes, budget cycles are, the overall budget cycles are annually, where we allocate for this particular segment of it, for this particular department this much amount will go. But of course project to project वो change होता रहता है. अगर आपके प्रोजेक्ट अगर नया आ रहा है और वो पाइपलाइन में नहीं था तो उसका फिर कॉस्ट तो आपका जब पूरी रिक्वायरमेंट आएगी उसके बाद ही पता लगेगा, राइट. Okay. Noted. Thank you. Any other query, guys? So that otherwise, can we move?
Okay, team. So, know the query. So let's start with Unit 3, Material and Inventory Management. So we are going to study this unit in this class and of course in the next class as well. And then, let's start what actually material. Sorry, 1 second. I'm unmuted, right? Let me know if you guys have any queries. So this is the unit that we are going to study. That is the material and inventory management. इसमें जैसे आपको नेम से पता लग रहा होगा, first we are going to study about what is inventory management, and then later we'll study about types of production planning, process of production planning and control, types of inventories, inventory control techniques, factor affecting plant location, and types of plant layout, right? So to start with the inventory management, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसे नेम से पता लगता है कि इन्वेंट्री हमने पहले भी क्लासेस में डिस्कस की है कि हमारा जो स्टॉक होता है, जो हम अपनी इन्वेंट्री में अपने जो प्रोड्यूस किया है आइटम और अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ, उस बीच में वी हैव टू फिनिश प्रोडक्ट हम स्टोर करते हैं, right? So inventory management refers to the process of ordering, storing, using, and selling a company's inventory. So this includes the management of raw material, components, and finished product, as well as warehousing and processing of such item. There are different types of inventory management, each with its advantages and disadvantages depending on the customer and company's need. So inventory management, as you can see, is the entire process of managing inventories from raw materials to finished products. So inventory management tries to efficiently streamline inventories to avoid both gluts and shortages. So four major inventory management method includes just-in-time material requirement planning, uh, just-in-time management, material requirement planning, which is known as MRP, economic order quantity, which is known as EOQ, and days sales of inventory, which is known as DSI. So there are different advantages and disadvantages which we are going to study in detail. सबसे पहले आता है द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि इसका फायदा क्या है. कंपनीज इन्वेंट्री इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट. अगर रिटेल में आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग, फूड सर्विसेज एंड अदर इन्वेंट्री इंसेंटिव सेक्टर, कंपनीज इनपुट एंड द finished products are the core of its business. A shortage of inventory when where there is a need, it can be extremely detrimental. So at the same time, inventory can be thought as a liability, कि मतलब कभी कभी आपका ऑर्डर नहीं आ रहा लेकिन आपने प्रोड्यूस ज़्यादा कर लिया, तो आपके लिए वो एक तरीके से बोझ हो जाएगी. तो आप मतलब प्रॉब्लम भी करेगी एंड स्पेस भी घेर रही है, जो स्पेस उसका भी आपको पैसा देना है, प्लस प्रोड्यूस ज़्यादा हो गया है. सो लार्ज इन्वेंट्री जो होती है वो बहुत बड़ा रिस्क कैरी करती है अपने साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट श्योर दैट वेदर यू विल गेट एन ऑर्डर और नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, एंड देयर आर चांसेस दैट योर प्रोडक्ट कैन गेट स्पॉइल. थेफ्ट हो सकता है, मतलब चोरी हो सकता है, या डैमेज हो, इट कैन गेट डैमेज, और there could be a shift in the demand. So this is one of the risks that come with the inventory. So inventory should always be insured, and if it is not sold in the same time, it may be disposed to at a clearance price or simply destroyed. For these reasons, inventory management is important for businesses at any sizes. Knowing when to restock inventory, what amount to purchase or produce, whether what price to pay, as well as to sell, and what price can easily become complex decision. So small businesses will always keep track of stock manually and determine the reorder point and quantity using um, spreadsheet formulas. So larger business will always be specialized enterprises, resource, ERP software. So these larger corporations will highly customize software as a services application. So कुछ softwares होते हैं जिसमें you basically put the वो जो दैट बेसिकली कैलकुलेट का आपको कितना डिमांड आ रहा है, तो कितना उस हिसाब से इन्वेंट्री आपको रेडी रखना चाहिए, एक्सेट्रा. So appropriate inventory management strategies vary depending on the industry. So for example, कोई oil department है, is able to store large amount of inventory for extended period of time, allowing it to wait for demand to peak. While storing oil is expensive and risky, there could be chances एक कोई उसमें फायर हो जाए या कुछ ब्लास्ट हो जाए, so there could be millions of pound of damage will get spoiled. There is no risk that an inventory will spoil or go out of style. For businesses dealing with perishable goods or products for which demand is extremely time sensitive, तो उनके लिए you cannot आप
कुछ अगर गुड्स होता है जिनकी डिमांड बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती है, उसका आइडियली यू शुड नॉट हैव मच ऑफ एन इन्वेंट्री, बिकॉज कुछ फैशन आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल सिटिंग ऑन इन्वेंट्री इज एन ऑप्शन, देन अदरवाइज यू विल क्रिएट प्रॉब्लम, और जैसे वो टाइम सेंसिटिव डिमांड है. So for companies with complex supply chain and manufacturing process, balancing the risk of inventory, global gas and shortage apply. To achieve these balances, firms have developed several methods for inventory management. First is just in time, which we are going to study in detail, and next is material requirement planning. And some companies, such as financial services firms, do not have physical inventory and so must rely on service process management. जिसमें मतलब वो उनके सामने नहीं होती है इन्वेंट्री, बट सॉफ्टवेयर के बेसिस पे दे ऑलवेज कैलकुलेट. सो दिस आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ व्हाई इन्वेंट्री इज इम्पोर्टेंट. इसके बाद आता है accounting for inventory, right? So inventory represent a current asset since a company typically intend to sell its finished good within a short amount of time. Typically, एक साल में inventory has to be physically counted to be measured before it can be put on a balance sheet. Companies typically maintain a sophisticated inventory management system capable of tracking real-time inventory level. So inventory is accounted for using one of the three methods: first in, first out, which is FIFO method; लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज द लीफो मेथड. के मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे पहले बना है वो सबसे पहले आउट जाएगा, मतलब फर्स्ट इन आए फर्स्ट आउट जाएगा. लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो मतलब लास्ट में जो बना है वो सबसे पहले जाएगा. और वेटेज एवरेज कॉस्टिंग जो मतलब वेट के बेसिस पे होता है. सो इन्वेंट्री अकाउंट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 4 सेपरेट कैटेगरीज. ठीक है, पहला आता है जो आपके स्क्रीन पे भी है. फर्स्ट इज रॉ मटेरियल. सो बेसिकली रॉ मटेरियल रिप्रेजेंट वेरियस इन मटेरियल्स a company purchase for its production process. These materials must undergo significant work before a company can transform them into a finished good ready to sell. दूसरा आता है वर्क इन प्रोसेस, ऑल्सो नोन एज गुड्स इन प्रोसेस. सो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं रॉ मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू अ फिनिश्ड गुड. रॉ मटेरियल आपका एक फाइनल प्रोडक्ट में बनना है, तो इसके बीच में वर्क इन प्रोसेस होता है. नेक्स्ट है फिनिश गुड, जो आपका फिनिश गुड अब रेडी हो गया वर्क इन प्रोसेस के बाद. सो दैट विल बी कंप्लीटली प्रोडक्ट रेडी अवेलेबल टू सेल फाइनल कस्टमर. लास्ट आता है मर्चेंडाइजिंग. सो रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स अ कंपनी बाय फ्रॉम अ सप्लायर फॉर फ्यूचर रीसेल. I hope accounting for inventory is also clear. Next is inventory management methods. Inventory management methods basically जो depend करता है on the type of businesses or products being analyzed. A company will use various inventory methods. Some of these management methods include just-in-time manufacturing, materials requirement planning, economic order quantity, and days sales of inventory. There are others, but these are the four most common ways of using and analyzing the inventory. Just-in-time management. So this manufacturing model originated in Japan in 1960s and 1970s. Toyota Motor basically contributed to the most of its development. So the method allow companies to save significant amounts of money and reduces waste by keeping only the inventory they need to produce and sell product. This approach reduces storage and insurance cost as well as the cost of liquidating or discarding excess inventory. So just-in-time inventory management can be risky, but if demands unexpectedly spikes, the manufacturer may not be able to source the inventory if needed, the demand, damaging its reputation with the customer and driving businesses towards competitor. Even the smallest delays can be problematic. So this manufacturing model जो होता है, method जो आपको allow करता है company to save significant amount of money and keeping only the inventory they need to produce and sell product. Right. Next आ गया आपका material requirement planning. So this inventory management method is sales for forecast depends, meaning the manufacturer must have the accurate sale record to enable accurate planning of inventory needs and to communicate those needs with the material supplier in a timely manner. For example, Sky Manufacturing using an MRP inventory system might ensure that a material such as plastic
fiberglass, wood, and aluminium are in stock base for forecast order. So, inability to accurately forecast sale and plant inventory acquisition result in the manufacturer's inability to fulfill order. ये आपका हो गया एमआरपी. थर्ड आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. तो ये जो मॉडल होता है इसमें इट इज यूज्ड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ यूनिट अ कंपनी शुड ऐड टू इट्स इन्वेंटरी विद ईच बैच ऑर्डर टू रिड्यूस द टोटल कॉस्ट ऑफ इट्स इन्वेंटरी while basically assuming constant consumer demand. So ये इसका डेटा एडवांटेज भी है कि कांस्टेंट डिमांड तो हमेशा नहीं रहती है, बट ईओक्यू में दिस इज ऑलवेज assumed. So this EOQ model seeks to ensure that the right amount of inventory is ordered per batch, so a company does not have to make order too frequently, and there is not an excess of inventory sitting on hand. It assumes that there is a trade-off between inventory holding costs and inventory setup cost, and total inventory costs are minimized when the both setup cost holding costs are minimized. I hope that is clear. राइट. तो इस मॉडल में बेसिकली इंश्योर करते हैं कि राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी इज ऑर्डर्ड पर बैच, सो अ कंपनी डज हैव नॉट हैव टू मेक ऑर्डर टू फ्रीक्वेंटली एंड देयर इज नॉट एक्सेस ऑफ इन्वेंटरी सिटिंग ऑन हैंड. ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री भी नहीं रहती है, बट जो ऑर्डर आता है वो इतना क्लियर होता है कि कंपनी इजीली कर देती है डिस्पैच. एंड नेक्स्ट आता है डेज सेल्स ऑफ इन्वेंट्री. So the financial ratio indicates the average time in days that a company takes to turn its inventory, including goods that work in progress, into sales. So day sales of inventory is also known as the average age of inventory, days inventory outstanding, days of inventory, days sales in inventory, or days inventory as interpreted in multiple ways. So indicating the liquidity of inventory, the figure represents how many days a company current stock of inventory will last. Generally, a lower DSI is preferred as indicated a shorter duration clear of the inventory through the average. DSI varies from industry to another industry. Right? So this is one of the most important method. There are the four method of inventory management. Please let me know if these are clear. Next we'll go to first we'll check like inventory management. What is the issue? What is the basically red flags in inventory management? If a company frequently switches its method of inventory accounting with reasonable justification, it is likely that management is trying to point a bigger picture of its business than what is true. So the SEC require public companies to disclose LIFO, like last in first out reserve, that can make inventories to costing compared to FIFO costing, or the first in first out. So frequently, inventory rights offer can indicate companies issue with selling a finished good or inventory obsolescence. This can also raise red flags with the company's ability to stay competitive in manufacturing, right? एंड अब हमने चार टाइप के इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिस्कस किए हैं. लाइक फर्स्ट इज जस्ट इन टाइम, next is material requirement planning, next is economic order quality, which is also known as EOQ, and days sales of inventory. So how did it like Tim Cook, the inventor of Apple, कैसे यूज करता है this is one of the question that it should come to your mind, like how did Tim Cook use inventory Apple management. So Tim Cook is known as an inventory genius. Inventory is like a dairy product. So Cook is quoted saying, "No one want to buy spoiled milk, right?" So you will always see like Apple is not very easily available everywhere. Usually when the Apple get launched, so it becomes really difficult for people to buy. You must be seeing a long queue in shopping malls and all over the stores, and after so many months also you don't easily get it. So this also creates curiosity and demand for the public, but also people always like the fresh item in their hand. This is what Tim Cook, the CEO of Apple, says. So if you talk about the example of inventory management, for example, just in time. So with this method, a company receive good as close as possible when they are actually needed. So if car manufacturer needs to install airbag into a car, it receive airbag as those cars come to assembly line instead of having a stock, right?
So the at the conclusion, I would say about these four inventory management. Inventory management is very important business part of operation, but proper inventory management depends on the type of business or the type of product you are selling. There may not be one perfect type of inventory management because there are like advantage and disadvantage to each depending on your business and the amount of product that you are delivering. Right now, this is the types of product planning. But before that, let's go to the queries. Team, let me know if you guys have any query. Uh, Avdesh, 1 second. So you are asking about how to calculate. So we don't like we are not going into that technicality, but I'll explain you the EOQ again. So basically, the model is used to inventory management by calculating the number of unit a company should add it to inventory with each batch, order to reduce the total cost of inventory while assuming मतलब इसमें हम लोग सबसे पहले तो एज्यूम करते हैं कि जो कस्टमर की डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट राइट एंड there will be like with every unit we are adding we'll have to add a product. So like the Smiths model seek to ensure that the right amount of inventory is ordered per batch so a company does not have to make order too frequently. Right, इसमें मतलब आपको frequently product नहीं बनाना पड़ेगा because the amount of जो demand आ रही है वो constant हमने assume कर लिया है पहले. Right, so this is one of the method, but इसका disadvantage ये है कि जो हमने assume किया it's not necessary कि it will be correct. Okay, I hope it is clear. Next is how to yeah, day sales of inventory. Please tell me, is there any practical example assumption? हाँ correct. So of this that is what ये that is the disadvantage of this method. But इसमें नहीं but ऐसा हमेशा नहीं है. कभी कभी कुछ इंडस्ट्रीज हैं ऐसी जिसमें कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और सॉरी डिमांड कांस्टेंट रहती है. पर फार्मा में भी बहुत सारे हैं मतलब जैसे कैंसेरियन है तो इस प्रोडक्ट की बहुत हाई डिमांड नहीं रहेगी जिसकी मेडिसिन है वो बढ़ती रहती है बट इट्स लाइक आप इजीली मीट कर सकते हो उनकी डिमांड राइट बट this is one of the disadvantage also of this method because कांस्टेंट हर इंडस्ट्री में नहीं है बट दिस इज व्हाट दे हैव अज्यूम इसीलिए हर चारों मेथड के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं बट ग्रेट पॉइंट ऑफ देश हेलो आई जस्ट वांट टू inventory stock and warehouse. Alright. Correct, Avdesh. Yeah, you are right. Just want to know inventory, stock, and warehouse all are in same if we consider e-commerce. No, it's not necessary it will be in same. It can be, but sometimes inventory, stock, warehouse क्या होता है आपका वेयर हाउस विल बी एट डिफरेंट प्लेसेस जैसे अभी ई कॉमर्स का आप बोल लो फॉर एग्जांपल आप मिंत्रा का ले लो आप मिंत्रा के वेयर हाउसेज विल बी ऑल ओवर द प्लेसेस लाइक इट विल बी क्लोज टू सम रिमोट एरियाज आल्सो जहाँ पे इजीली यू वोंट सी द फैक्ट्रीज एंड ऑल राइट बिकॉज order will go and it will basically dispatch within 2 to 3 days. So it's not necessary it will be the same, but it can be same depending on the size of the company. अगर कंपनी बड़ी है तो यूजुअली डिफरेंट होते हैं बट अगर कंपनी आपकी छोटी है तो it will be same. But it's not mandatory. Like you are saying, it should be same? No. Then somebody was asking DSI, right? So the financial ratio इसमें indicate होता है the average time in day that a company takes to turn its inventory, including goods
that are work in progress into sales. So इसमें मतलब फाइनेंशियल रेशियो है जो भी हमारा रॉ मटेरियल है या गुड्स है इनटू अ सेल्स. सो DSI इज आल्सो नोन एज द एवरेज एज ऑफ इन्वेंटरी, राइट. सो इसमें बेसिकली एक न्यूमरेटर पाएगा कितने टाइम में एक प्रोडक्ट को कंपनी ने प्रोड्यूस किया, एंड डिपेंडिंग ऑन द लाइक इट इज गेटिंग dispatch जो इन्वेंट्री आपकी खाली होगी प्लान जो आपने बनाया. दैट इज फर्स्ट वाज द इंट्रोडक्शन टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट, and there are 4 methods that we have discussed in detail. And so now the next topic is types of production planning. सो प्रोडक्शन प्लानिंग आपको ना, अभी तक हमने इससे पहले पढ़ा था सर्विस मतलब कैपेसिटी प्लानिंग पिछली यूनिट में, मतलब प्रोडक्शन. अब हमें प्रोडक्शन कैसे प्लान करना है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू study. So production planning is the process of certain plan for future production within a manufacturing organization. So ये जो technique है, it is very important for a modern day manufacturing operations as it establishes the groundwork for how production should be running, identifying areas where productivity is lacking. So without production planning, manufacturing facilities were unable to schedule their production process efficiently, which limits the entire production output. When mistakes are made during the planning process, result is an inaccurate schedule leading to the late orders, internal chaos, unhappy customer, and lost business. Right, so the creation of production plan encompasses many different areas that must come together to create a single plan and set the target of any production. Right, so one of the main goal of the production plan is to use all the available resources and material efficiently. By looking at your availability inventory when creating your plan, purchase material, you will ensure that you only need to buy what you not currently have on hand to supply your job. So, in addition, the production plan will ensure that you are not overloading your resources by only planning work on resources that you have additional capacity. So, this will allow you to identify areas where resources or workers are not used as efficiently as they can. So, how many types of production planning are there? Basically, 5 types of production planning, which you can see on screen. So, let's discuss one by one in detail. First is job-based planning. So job-based or project-based production forces or manufactures a single product as either handled by a single worker or group of people. The type of job that falls under this type of production planning can be on a small scale, such as creating a customized piece of jewelry. A larger, more complex production processes or projects such as building customized houses also fall into this category. So जो प्रोडक्शन प्लानिंग होती है for small scale job that require very little specialized equipment is relatively easy to execute. This allow product to be made according to their customer results request and can be usually be included at the time of during the production process without altering the progress. Right. ये तो आगे job based planning. Next आता है batch method. So the batch production is used when items are produced in groups rather than individually or through the continuous production. For example, cookies are produced in the batches, which means they are each production step occur at the same times of the batch of cookies. You will start by measuring the ingredients for the entire batch, then mix them together, and finally उसको आप bake करोगे एक साथ so that the entire production process of the batch of the cookies start and at the same time. So इसमें challenge आएगा सबसे बड़ा, while using the batch production is accounting for the constraint at the each operation step to ensure that you maximize your resource capacity without going over the maximum limit, right? So for example, जैसे आपने cookies का ये जैसे आपने आटा like dough को mix कर लिया, can fit a batch for the 100 cookies, then you can only bake 300 at a time. Like you may encounter bottleneck in productions. ये आपका हो गया बैच मेथड. ये तीसरा आपका होता है फ्लो मेथड. So flow method is basically manufacturing is a demand driven method and that is characterized by the continuous flow of units through the production line. This technique is constantly uh, this technique is commonly used in the production of television and household appliances where the product is manufactured by number of collecting operations in which material move from one stage to another without time lags or interruption. So benefit of flow method of the production are the manufacturer can minimize the number of work in progress and work in process finished goods, and items can hold the inventory, reduce cost and reduce manufacturing led items. So this is the advantages of the flow method. Next आता है mass production method.
तो इसमें क्या होगा, इट इज़ वेरी सिमिलर टू फ्लो प्रोडक्शन. सो दिस टेक्निक इज हाईली बेनिफिशियल व्हेन प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द सेम आइटम्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. So this type of production is usually automated with reduce the number of cost of the labor required for the production. Some manufacturing facilities have assembly lines decided and dedicated to a specific type of the item, which reduces the changeover time required and increase the overall production output. So this allow manufacturers to increase their profit as the cost for the production is greatly reduced. With this method, operations are scheduled based on the availability of resources, capacity, and the production time process. और लास्ट आता है प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग मेथड. तो इसमें क्या आएगा, प्रोसेस प्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूस प्रोसेस सिमिलर टू मास प्रोडक्शन एंड द फ्लो प्रोडक्शन जो हमने ऊपर देखा, but it is characterized by the continuous flow of material through the production line. Usually, the finished good produced in this type of production are not counted as discrete unit. For example, the production and processing of liquid, gases, or chemicals, where the product is being produced in a uniform and a standardized sequence. The process method uses specific and sophisticated machinery to process materials at each operation step. This is the little room of like error, which is typically and a type of manufacturing changing from one item to another will require long changeover period. So it is also common to have byproduct or waste the result from this type of manufacturing. ठीक है, तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग. फिर नेक्स्ट है तो अब आपको जैसे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग है, पीपीसी होता है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल जिसको हम पीपीसी भी बोलते हैं, उसमें is defined as a work process which seek to allocate human resources, raw material, and equipment machinery in a way that optimizes efficiency. So, production planning and control refer to two strategies that work cohesively throughout the manufacturing process. राइट. तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में आपका हमने पढ़ लिया, जॉब बेस्ड आ गया, बैच मेथड आ गया, फ्लो मेथड आ गया, मास प्रोडक्शन मेथड आ गया, लास्ट आ गया प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग मेथड. राइट. नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल. सो इज बेसिकली इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेगुलर एंड टाइमली डिलीवरी. करेक्ट. जैसे हमें पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास आपकी प्रॉपरली अब कंट्रोल है, प्लानिंग है, तो आप प्रॉपरली उसको रेगुलरली डिलीवर करोगे. बेटर सप्लायर कम्युनिकेशन, जिसके से में रॉ मटेरियल, क्योंकि हमें पता है कि कितना डिमांड आएगा तो हम रॉ मटेरियल उतना ही प्रोक्योर करेंगे. राइट. इन्वेंट्री आपको सिर्फ इतनी स्टॉक करनी है बिकॉज आपका प्रॉपर प्लानिंग है, तो आपको सिर्फ इतनी वेस्टेज बहुत कम हो जाएगी इन्वेंट्री में. एंड रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. ऑफ कोर्स बात है, अगर आप ये सब स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेगा. राइट. फिर उसके साथ आपका एरर कम होंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी. देन स्मूथ फ्लो ऑफ ऑल प्रोडक्शन प्रोसेस. तो इसमें जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो उसका फ्लो बहुत स्मूथ हो जाएगा. फिर अल्टीमेटली बिकॉज वेस्टेज कम है तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स बहुत कम हो जाएगा, कॉस्ट आपकी बचेगी. आपका क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बच रहा है तो आप अपनी कंपनी आपकी इट विल कंट्रीब्यूट मोर टू द इकोनॉमी ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंट्री. सो दिस इज, ये सब स्टेप बाय स्टेप कनेक्टेड होते हैं. सो दैट इज द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. नेक्स्ट आता है हम करते क्यों हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कैन बी वेरी फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर. वैसे तो ये हर बिजनेस, हर चाहे आपकी किराने की स्टोर है या फिर आपकी बहुत बड़े कंपनी के ओनर हो, तो डिपेंड करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. बट ओवरऑल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है. सबसे पहले तो आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो हमने भी पीछे पढ़ा कि आपका बिकॉज आप प्रॉपरली प्लान करोगे तो आपका इन्वेंट्री जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कॉस्टिंग में आपकी कंपनी के, या प्रॉफिट में या लॉस में, उसको हेल्प करता है रेगुलेट करने में. राइट. फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस करेंगे. राइट. जो अगर आपका है उसको हम पूरा यूटिलाइज कर लेंगे और उसका पूरा एक बेनिफिट होगा. फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन स्केड्यूल टिपिकली विद द हेल्प ऑफ डायनामिक प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग सॉफ्टवेयर टू मेक श्योर दैट राइट क्वालिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा ये सब यूज हो रहा है. अब आप क्योंकि आपने प्रॉपर प्लान किया है तो आप राइट क्वांटिटी ऑफ राइट क्वालिटी, आपकी जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो अवेलेबल होनी चाहिए, कुछ आपका फालतू चीज़ें यूज नहीं होंगी बिकॉज यू हैव प्रॉपर्ली प्लान्ड, देयर इज नो प्रोडक्शन टाइम्स एंड कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन इज अलाइंड. राइट. सो दिस इज व्हाट the objective of PPCs. Right. And then talking about the role of the
planning, production, and control in the manufacturing industry is to basically ensure that materials and equipments are available when needed and that everything runs smoothly. Component traceability and production have a special challenges in the element industry that requires diligent planning. So the end goal is not to meet the most efficient and profitable product. तो हमने किया कंपनी को सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट चाहिए होता है लाइक फिर आता है नेक्स्ट phases of production planning and control. This will be the last topic for today. फिर we'll discuss some queries and then बाकी हम next class में लेंगे. So there are several basic phases of production planning and control. First is routing. So this part of planning involves the precise route a product or the material takes on the production line. The whole operation is planned and designed carefully, and the part of the sequential order is determined and agreed on. So इस स्टेज पे where equipment is used, resources will be considered, right? तो इसमें हमें पूरा प्लान करना पड़ेगा कि what our route is going to be, what our product material हम लेंगे प्रोडक्शन के लिए. फिर दूसरा आएगा scheduling. So this scheduling state is used to determine the time needed for the process, resources and machines to complete a certain step, activity or task. पूरा scheduling का तो नाम से पता लग रहा है कि पूरा we are going to plan and schedule. तीसरा आता है loading. So this is when the execution of the scheduling of the in the routing occurs. The load of each of the routing points start and an operations activity are checked for the resources, support and help. So it's during the step that a assignment of the individual work will take place. It is also when efficiency will be put to the test. And last are the just in time. So just in time is a Japanese management philosophy. It has also it has been applied in the practices since the early 70s and in many Japanese manufacturing organizations. So it was developed within the Toyota manufacturing plant. It was primarily used as a mean of the meeting consumer demand within minimum delays. कि मतलब जो भी आपका कंज्यूमर का डिमांड है जस्ट इन टाइम नाम से पता लग रहा है वो जल्दी से जल्दी हम डिलीवर करें बिना किसी डिले में. So JIT manufacturing can strengthen the organization competitiveness by reducing waste and improving product quality and efficiency. Right? So just in time is मतलब जैसे हमने अभी डिस्कस किया and you know there are strong cultural aspect of just in time method. So Japanese सबसे पहले अपने work ethics के लिए they used to follow this. So workers are highly motivated to see constant improvement in work processes. Even if present benchmarks are achieved, there is a desire to set high benchmark. A focus on a group efforts which involve in combining of talent of multiple employees and knowledge sharing between people, development of problem solving skill ideas and achievement of a common goals are some of the important objectives. फिर work is considered to be most important than leisure, so it is not usual for Japanese employee to work 14 hours a day, right? इसमें मतलब काम को ये लोग इतना important देते हैं and Japanese usually काम करते हैं बहुत ज़्यादा hours के लिए. फिर employee tends to remain with one company throughout the course of their career span, which is very मतलब वो throughout एक company में ही रहते हैं employees usually Japan में. This allow the opportunity for them to develop their skill and abilities over a period of time. These benefits result in employee loyalty. जब आप इतने टाइम तक कंपनी में रहोगे लो एम्प्लॉय टर्नओवर कॉस्ट बिकॉज नया आएगा उसको पूरा आपको ट्रेन करना है उसको झंझट ही नहीं है सब एंड फुलफिलमेंट ऑफ अ कंपनीज गोल इन अ लॉन्ग टर्म बिकॉज आप एक कंपनी में होते हो तो आपको पता होता है कि कंपनी का अल्टीमेट गोल और मिशन क्या है राइट सो जस्ट इन टाइम्स बेसिकली एम्स एट डूइंग प्रोडक्शन विद मिनिमम वेस्ट सो उसमें वेस्ट बहुत कम हो जाता है बिकॉज एक कंपनी में रहता है आपको नॉलेज बहुत आती है वेस्ट इज टेकन एज अ मोस्ट जनरल सेंस एंड इट इंक्लूड्स वेस्ट सिर्फ रॉ मटेरियल का वेस्ट नहीं टाइम वेस्ट भी होता है मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज सो कितने टाइम लाइक वेस्ट फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन या वेस्टिंग टाइम होता है या ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट होता है या प्रोसेसिंग का वेस्ट होता है इन्वेंट्री का वेस्ट होता है वेस्ट ऑफ मोशन वेस्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन एफर्ट तो जस्ट इन टाइम सिस्टम हैज number of benefit जैसे reduce level of work in process inventories raw material and finished good reduce space requirement increase product quality and reduce scrap and rework reduce manufacturing lead items smoother production flow workers participation in problem solving and building of the good relationship with vendor because एक टाइम तक इतने टाइम तक अगर कोई एक ही काम करेगा तो increase overall productivity level and efficient utilization.
So in basically we can say that just in time is an integrating process which integrates organization with its vendor channel partners and ensures smooth flow. So this is all. Next we are going to take Kanban in the next class. Let's go to the queries that you guys have put on. Yes, Sachin, please. Now you can ask the doubt. Yes, you are mute because you like students are not allowed to get unmute. Rest everyone, if you have any query, please uh, let me know. Sachin, doubt should be related to class only. Yes, Sachin, tell me. Yes, plan maintenance, production planning. Write it as a paragraph. It will be uh, better. Maintenance type. Other people also, I see like around 54 people in the class. Let me know if you guys have any query on production planning. Saurabh, please check with the coordinator. I'm not sure, like, because we are already delivering it. So I'm not sure from where. Please check with your course coordinator, whosoever is. Okay. What are you saying? Maintenance type. You are asking something, Sachin, or telling me? Please write a proper question because it's very unclear. I hope, Saurabh, that is clear. Thank you. Okay, Mohadita. Sachin, I would prefer if you can write anything in um, paragraph. I would understand because you are writing just two words, which is not clear at all. Uh, Rehan, which what flow method you want? Please confirm which flow method. You just reading flow methods. Flow methods regarding what? Thank you, Anjali, for confirming. Got it. Yeah. Rehan, I'm sharing screen for you. So this is the phases of production planning. I think you're talking about this one. Okay, these are the four stages of production planning and control, and just in time is the main one. So we have discussed it in that in detail. Okay. Okay, team. Thank you so much. We'll meet in the next class. Till then, have a great week ahead, and let me know if you guys have any queries in the next class. We'll continue with the unit 3. Thank you, guys. Bye.